Hello everyone. So this is going to be our first lecture for class 9 science. Okay. So we are going to start with the very first chapter of class 9 science. So we know what is the name of the first chapter. Our first chapter is laws of motions. So we are going to start this particular chapter today. So before focusing on the laws of motions, let us know what is meant by motions first. Okay. So now what is motion? It is a change in position of particle or object with respect to its surrounding. How motion is defined? It is nothing but change in position of particle or object with respect to its surrounding is called motion. If a particle or an object is changing its position from one place to another, then that particular process can be called as motion. जब एक पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट अपना इनिशियल पोजीशन से बाजू होकर वहां से अलग होकर दूसरे पोजीशन को एक्वायर करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशंस बोलेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन है। सो दिस इज द व्हीकल। ओके, पुलिस की गाड़ी है। सपोज पुलिस वाले को फोन आया पुलिस स्टेशन में कि एक पर्टिकुलर बैंक में रॉबरी हो रही है और पुलिस ऑफिसर्स जो है वो पुलिस स्टेशन से निकले और बैंक में पहुंच गए रॉबर्स को पकड़ने के लिए। तो वो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर ने क्या किया है? अपने पोजीशन को चेंज किया है। हिज इनिशियल पोजीशन वाज पुलिस स्टेशन, बट हिज फाइनल पोजीशन हैड बिकेम नाउ अ बैंक। ओके, सो ये जो चेंज है पोजीशन का, इसे ही मोशन कहा जाता है। ओके, रिमेंबर दिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। किसमें है वो? रेस्ट में है। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग मोशन देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ओके, तो मोशन क्या है समझ में आपको? व्हाट इज मोशन? इट इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इस पोजिशन then we can call it as motion. Okay, now the motion is clear. Now let us know what is the difference between distance and displacement. Okay, a lot of times I have seen that students get confused in these two terms, distance and displacement. They consider these two terms as same, but distance and displacement is not 100% same. Okay, there is some kind of differences between these two terms. So let us understand this. So what is distance? It is the length of the actual path traveled by an object in motion while going from one point to another. Okay, so it is length. One of the most important thing is that it is length of actual path. Okay, so consider this house. This is Rob's house. Okay, and this is Bunty's house. This both are going to their school in the morning. Okay, so the distance between the Rob's house and the school, let us consider it as 100 meters. Okay, what is the distance? 100 meters. So this is this length between the house, Rob's house and school is nothing but the distance. Okay, this is called as distance. Suppose that Rob leave for school. Okay, and he had covered this distance. So we can say that Rob had covered 100-meter distance. Okay. Similarly, Bunty has also had left for school, and he also had gone to school. He had changed his position from his house to school. Okay. Consider that the distance between his house and school is 150 meters. Okay. So this particular thing, the length between two endpoints is nothing but distance. Okay, or an actual path covered by the object. जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पाथ को कवर करेगा, जितना उसका पाथ होगा, जितना उसने ट्रेवल किया है पर्टिकुलर पाथ के ऊपर, उस लेंथ को हम लोग क्या समझते हैं, क्या कंसिडर करते हैं? डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो लेंथ है वो लेंथ को हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। अभी रॉब अपने घर से निकला और स्कूल में गया, 100 मीटर का डिस्टेंस है, और रॉब वापस स्कूल से घर में आ रहा है शाम को।
तो उसने वापस 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ओके, सो 100 + 100 कितना हुआ, 200 मीटर्स। सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ रॉब ने जो कवर किया है वो 200 मीटर्स हो गया। ओके, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट्स। ओके, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, मतलब जहां पे मोशन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे मोशन खत्म हो रहा है, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नाउ कंसिडर कि रॉब अपने घर से निकला स्कूल के लिए। ओके, सो ही हैड कवर्ड नाउ 100 मीटर लेंथ। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट वन रॉब हाउस से लेकर के स्कूल स्कूल तक का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 मीटर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। सो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये फिनिशिंग पॉइंट है हमारा। सो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे उसे फिलहाल हम लोग। ओके, सो 100 मीटर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब शाम को वापस रॉब अपने घर पे आया स्कूल से। ओके, सो उसने वापस लेंथ कितना कवर्ड किया है, 100 मीटर। सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, 100 + 100 200 मीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ध्यान से आप लोग यहाँ पे सुनिए। डेफिनेशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। सो जहां पे मोशन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा लेंथ का, वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन रॉब ने अपना मोशन स्टार्ट किया अपने घर से और उसने अपना मोशन खत्म भी किया, स्टॉप भी किया अपने घर में ही। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें क्या मिला, जीरो मिला। क्या मिला हमें, जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, जीरो है। याद रखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 99% सेम है। फर्क कहाँ पे आता है, अगर हमारा मोशन जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वापस आके अगर खत्म होता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ विल हेड टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी ये दो टर्म्स डिफरेंट भी इसीलिए है क्योंकि उनमें उनका फॉर्मूला देखिए आप लोग, सी द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, whereas the formula of velocity is displacement upon time. Okay, so this is the basic difference, that speed is related to distance whereas velocity is related to displacement. Okay, in this formula I have denoted distance with small d. Okay, remember this, and time with small t. So while solving numericals or problems we will use these denotions. Okay, and for velocity the denotion are displacement. For displacement I have used s, and for time we have used t. Okay, for velocity it will be small v. Okay, remember this. Now what is velocity, it is the distance traveled in one direction by an object in unit time is called its velocity. So whenever a particle or an object, or we consider here a bicycle, okay, it is traveling from one point to another. Okay, so the distance traveled by that particular object in a unit time, that particular process is called as, that particular term is called as velocity. Okay, now obviously these two are physical quantities, speed and velocity, so there are units for them. So what is the unit of speed and velocity? Okay, they are same. The unit for speed and velocities are same. Okay, the SI unit is meter per second. Learn this unit very carefully. Okay, listen this carefully, that the SI unit of velocity is meter per second, whereas the CGS unit is centimeter per second. The units for velocity and speed is same. Okay, now there is some difference between speed and velocity, and why velocity changes, for what factors or due to what factors this velocity changes, we will consider that now. Okay, now listen, velocity depends on speed as well as direction, and velocity changes by, okay, now this particular physical quantity velocity, it depends on speed as well as on direction also. Okay, in which direction you are performing your motion, that is going to affect the velocity. Okay, so what changes we will see,
in this regarding these two terms, okay, that affects the velocity. The first is changing speed while keeping direction same. Okay, if we are changing our speed and our direction is same, we are not changing the direction but we are changing the speed, then it is going to affect velocity. Okay. Second, changing direction while keeping speed same. Now we have kept our speed same but we are changing our direction. Okay, we are changing our direction. We change our direction and speed is same. That is also going to affect the velocity. And the last is changing both speed and direction. If you are changing speed and direction simultaneously, then it is also going to affect the velocity. Okay. Now one more basic point, that this particular physical quantity speed, it is under the category of scalar quantity. It is scalar quantity, whereas velocity is vector quantity. So what is scalar and what is vector? Scalar quantity is a quantity, fundamental quantity or physical quantity that depends only on magnitude, that is amount. ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब उसका सिर्फ हमें अमाउंट देती है किसी भी प्रोसेस का, तो उससे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे. ओके. और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच gives magnitude and also depends on direction. जो magnitude और direction दोनों के ऊपर depend करती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? Vector quantity बोलेंगे. Okay, remember this. So in our next lecture we will solve some numericals on these two physical terms, that is speed and velocity. Okay. So what is the homework for today? You have to define motion, distance, displacement and velocity and learn those definitions, as it is one of the most important question for examiner in your papers also. Okay, it will give you 1 mark but it is important, and understanding those terms are more important. Clear? So let us have a recap of what we have studied today. So laws of motions, basically this is the first part of this first lecture of this particular chapter, laws of motions. So slowly we are going to head towards these laws, but first we must know what is motion. So what is motion? It is nothing but change in position of particle from one place to another with respect to its surrounding. That is nothing but motion. Okay, if a particle is not performing a motion, then we call that particle at rest. What we consider that the particle is at rest. Okay. Now if we talk about motion, definitely these two terms are arrived, that is distance and displacement. Okay, so distance is nothing but the length traveled by or covered by the object. The actual path traced by the object is nothing but distance. Okay, whereas displacement is different from distance, and it what perspective? It is the minimum distance between the starting and finishing points. Okay, so consider that point A is your starting point and point B is your finishing point. Okay, so the distance between these 2 points is going to be your displacement. And if the initial position or the starting point is A, and the finishing point is also A, the starting and finishing points are same, then the displacement is going to be 0. Okay, then we have seen speed and velocity. Okay, so speed is nothing but the ratio of distance to time. Okay, and velocity is the ratio of displacement to time. Okay, the units of these two physical quantities is same. The SI unit is meter per second and CGS unit is centimeter per second. Okay, velocity depends on speed as well as direction, as it is a vector quantity. Velocity is a vector quantity, so it depends on amount as well as on the direction. Okay, so what will happen if we change speed and we kept the direction same? Then this is going to affect velocity. Okay, and if we change direction while keeping the speed same, that then also it is going to affect the velocity. And the last factor that affects the velocity is nothing but if we are changing both speed and direction simultaneously, then that is also going to affect the velocity. Okay, so in the next lecture, we will solve some numericals. Okay, thank you.